decision making, study workflow, strong business relation, and better professional relation. These are the basic things, because whatever we wanted to say, or whatever the information we wanted to transmit, that the reader will understand that particular message or information in the same way we are intended to. Then what will happen? The communication gap will resolve, and the problem will be they'll resolve the problems in a quicker time, like in a quick way. They'll have better decision making understanding. The work will steady and fast. Business relations will improve because there'll be no communication gap. And final thing is, they'll create certain good professional image. Okay, so let's talk about, these are our topic is 7 C's of effective communication. So we've studied about what is this effective communication means and what are its benefits. So let's talk about the 7 C's. So what are the 7 C's? First is, your communication must be clear. Second is, must be correct. Third is, must be complete. Fourth is concrete. Fifth is concise. Sixth is consideration. And seventh is courtesy. Okay, so we'll see what are these things, and how can we inculcate these important C's in our communication and make our communication effective. Okay, so first we see that first thing we have to consider in our communication is that your communication or your message must be clear in nature. The message should be clear and easily understandable to the recipient. The purpose of communication should be clear to the sender, not only the receiver. Not only the receiver will be sure about it. The Hello, can you hear me? Yes, ma'am. Really sorry guys, my Wi-Fi just went off. We are facing power cut here because of this weather. Yes, so where were I? Correct one. Just wait a minute. Yes, we were talking about clear form of communication, why your communication must be clear in nature. So see guys, it says that your communication must be clear and easy to understand. Yes, and how that will happen? So what we do, like in our basic lives, that we usually try to incorporate lots of information at once, but that usually don't work, because we'll talk about this particular topic and then we suddenly jump on the another one. Then the reader or your audience, they'll they'll be confused because of this. So you have to focus on one particular goal or one particular message at a time,
and you must try that you complete that task first and then you begin the second one. Same goes to your exam, answer sheets in your examination. Try to complete your particular topic or your statement or your argument first, and then move on to the second point. Don't try to mix and match certain, because it will create a confusion for the reader and for your audience to understand it. So this means that your particular message, or like uh, whenever you will be indulging in any sort of communication at your workplace or at your professional life, try to make your communication clear in nature. That means you have to focus on your big tasks first. You have to focus on your certain points. Like first you have to complete a topic, then you have to move to the another one. Try not making it like very confusing in nature. Like try to like when we are humans, we usually try to do this multitasking thing. But as far as I know, this usually doesn't work. Okay, how? See, this is very general in nature. Imagine you are writing down a report or something and you are talking about this particular issue. Okay, and you are building this report. That means that report must be technical in nature and it has some technical quantities and characteristics. So, firstly, introduce it, then bring out your argument, like what is it talking about, what are the issues that the particular people are facing about that report. Okay, then bring out your pointers one by one. Don't try to mix and match these things because it will create confusion for the reader. Okay, and yes. So next thing is correct. Your communication or your information must be correct in nature. How it will be correct? Yes. The message should be correct, that is, a correct language should be used, and the sender must ensure that there is no grammatical mistakes, spelling mistakes. Also, the message should be exact and well timed. The correct message have a greater impact on the receiver. At the same time, the morale of the sender increases with the accurate message. Yes. Whenever we are trying to incorporate strict authenticity to our message, we usually do these things, like we have to speak properly, we have to present ourselves properly, we have to write it down properly, we have to use certain words properly, we have to check a grammar as well. Yes, because see, if your message will be grammatically correct, and like whenever you are writing the information or you are preparing any speeches or reports or manuscripts, so just check whether or not your grammar is correct. Okay, second thing, whenever you are addressing certain audience, you have to make sure that the words, the heavy words, especially the heavy words, whichever you are using, must be pronounced correctly, because it usually happens mainly because of some regional issues. I've seen that people from southern part of the India usually say M yum, एंड आप लोगों ने भी देखा होगा कि प्रोनाउंसिएशन हमारा वैरी करता है स्टेट टू स्टेट. But instead of using such heavy words, you can use small and normal words, but you have to pronounce them correctly, and you must know the meaning of that word and how should we use that particular word. Okay? Is it clear or not? मैम स्क्रीन विजुअल नहीं हो रही. What? Yes, मैम स्क्रीन नहीं दिख रही. Is it okay now? मैम स्क्रीन नहीं दिख रही. अभी भी नहीं दिख रही. नो मैम. बाकी लोगों को दिख रही है.
Yes, ma'am, visible है. Okay. मैम यार 4 दिनों से बारिश हो रही है, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहे. हाँ, तो mainly because of that. Because I'm facing this same issue. There's no electricity here. Okay, so this is uh, your correctness. First thing was your message must be clear in nature. It has certain clarity. Second thing, it should be correct. And third thing is your complete or your completeness. So the communication must be complete. It should convey all the facts required by the audience, and the sender must take into consideration the receiver's mindset. Okay. How your conversation or how your message must be complete, like will become complete. Firstly, you have to make sure that whatever argument you are making, if you prove them, you have to support them with certain facts and figures, because it because that particular experiment will make your document or your data or your speech or your report authentic. Okay, the complete information gives answer to all the questions of the receiver and help in the better decision making by the recipient. Okay, so it must answer all the questions of the receiver. And what will be those? Like what are the basic questions? We usually say this thing that what is it, your speech or your report or your writing must be complete in nature and must answer all the question of your receivers. What are those questions? So see, I haven't mentioned that in this particular document, but I'll provide you the notes. So it is those questions are 5 W's and 1 H. What are those 5 W's? Who, what, when, where, why, and 1 H is how. Whenever you plan to make any research paper or any report or like whenever you ask to present anything in any meeting or on the stage, just make sure that your argument or your papers answer these questions. And these are who, what, when, where, why, and how. Okay. And one more thing I want to add here about this completeness or your complete effective communication, that we usually try to over our information in our documents or in our answers or in our reports. So what we used to do कि हम लोग एक चीज़ लिख रहे हैं, we talked about certain thing and साथ में बात करते करते we put it down some important facts and figures and whatever like the information required, and along with that we add some extra point as well. But वो extra points required नहीं होते, then that particular thing will make your document or your report or your file bulky in nature. So we've discussed this in a very first class that technical communication must be very concise and point to point in nature. But यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं effective communication की, जो कि एक technical communication का ही part है, that it must be complete in nature. That means you have to support them with certain facts and figures. अब ये क्या चीज़ होगी? See, point to point का मतलब ये नहीं होता कि you'll not add some crucial information or you left some crucial information. No, you have to add those points, you have to add those information, but at the same time you make sure that उस प्रोसीजर में उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में कुछ एक्स्ट्रा अनवांटेड या अननेसेसरी चीज़ें नहीं हो.
बिकॉज जहाँ पर वो आपकी पर्टिकुलर फाइल बल्कि होगी, दैट मीन्स वो ये पर्टिकुलर जो कोड है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का उसको फॉलो नहीं करती. ओके पवन. यस. ओके. नेक्स्ट थिंग इज your communication must be complete. What is this? The communication should be complete, which means the message should be clear and particular, such as there is no room of misinterpretation is left. All the facts and figures should be clearly mentioned in the message so as to the substantiate to whatever the sender is saying. Yes, yes. Okay. हमने starting में देखा that your particular message should be clear. That means one goal at a time or one message at a time. Second thing, it must be correct. There must be no grammatical or spelling mistakes or no pronunciation mistakes. Third thing, it should be complete. And complete कैसे होगा when we'll add certain points to it. And now we talked about this completeness. What is it? Yes. So basically, whenever we try to write down any technical file or data, we talk about so many things. Okay, हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि ये सारे आंसर्स को क्वेश्चनेबल लाइक ये सारी लोगों के जो आंसर्स जो भी क्वेश्चन है उनको आंसर कर सकते हैं, आंसरेबल है या नहीं, करेक्ट है या नहीं, क्लियर है या नहीं. बट हम लोग ये चीज़ भूल जाते हैं क्या ये कंप्लीट है या नहीं, एंड व्हाट इज दैट. सो सी, हम कभी भी किसी भी टेक्निकल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं या फिर किसी भी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, सो देयर इज सर्टेन स्पेसेस एंड वॉइड इन द मैसेज. फॉर एग्जाम्पल, अब लिटरेचर साइड, ह्यूमैनिटी साइड लेते हैं. आप लोगों ने अपने स्कूल टाइम में यू हैव read certain poems or stories, and the meaning of that particular poem or story varies from person to person, because that document, that poem has certain voids. वो बीच बीच में गैप छोड़ती है ताकि रीडर जो है अपनी थिंकिंग के साथ ही उसमें उसका मीनिंग बना सके. Each and every poem or each and every story has its own reality. Okay, and it varies from person to person. But when we talk about technical files or technical reports or manuscripts, there must be no void. You cannot create a space so that your reader or your audience can misunderstand your message or whatever you are talking about. You cannot misinterpret your message. Okay, so see, clear है, correct है, complete है, and particular और पर्टिकुलरली बैलेंस्ड है. अब वो कैसे होगा कि अपनी जब भी हम लोग फाइल्स एंड ये सारी चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं, व्हेनेवर वी मेक सम मैन्युस्क्रिप्ट और रिपोर्ट्स, टेक्निकल रिपोर्ट्स, तो हम लोग ये चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि ये किसी भी एक्स्ट्रा जो डाउट है, जो फॉल्ट है, उसको क्रिएट ना करें. एंड वो चीज़ कैसे होगी जब हम बैलेंस्ड उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐड करेंगे और अपनी आर्गुमेंट को क्लियरली करेंगे एंड क्लियरली मेंशन करेंगे. ओके, एंड जो कंक्रीटनेस है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है, ये एक ऐसा मोड है दैट विल इंक्रीज योर मोरल, योर स्ट्रेंथ एंड योर प्रोफेशनल फिगर. ओके, आपकी इमेज को मेंटेन करने के लिए ये पर्टिकुलर जो सी है, ये दिस कंक्रीटनेस है आपके टेक्निकल कम्युनिकेशन में, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. बिकॉज यू मस्ट नॉट गिव अ स्पेस टू योर रीडर टू मिस इंटरप्रेट योर मैसेज. ओके, guys, can you hear me? Yes, ma'am. Okay, and next thing is conciseness.
हमें पता है कंसाइज क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट जब हम मैसेज को रखते हैं, दैट इज कॉल्ड कंसाइजनेस. दैट मीन्स योर रिपोर्ट्स शुडंट बी बल्की इन नेचर. सो ये भी एक पॉइंट है दैट विल मेक योर data or your document with more attractive. There are certain things we have to keep in our mind किसी भी रिपोर्ट को लिखते टाइम, that we must highlight the main message and avoid using excessive or needless words like I don't remember, I used to say this word, this term a lot. Yes, at this time, like I used to say this a lot in my college time, that at this time or due to the fact that, but I forgot that these particular statements, these particular phrases have some small and very common terms, like we can use now instead of at this time, or because instead of due to the fact that. Okay, so you must eliminate the wordiness of your data, of your information, and try to incorporate some simple and small words, so that will help the reader or your audience to understand your message well. Next thing is your consideration. Okay, so we've talked about this background thing a lot in our last class in the barriers, that we have to consider our audience background. So this is about that only. We have to consider our audience. Like the sender must take into consideration the receiver's opinion, knowledge, mindset, background, etc. in order to have an effective communication. In order to communicate, the sender must relate to the target recipients and be involved. Yes. So a reader must step into the shoes of other. Or sorry, a sender must step into the shoes of other. Whenever we are addressing anywhere, we must we should be like very clear in our mind that we have to consider our audience, because see, without consideration there will be no particular cycle of communication. Because अगर आप किसी को समझा नहीं पाएंगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आप उनके साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे, then what will happen कि आपको आपका डिज़ायर जो फीडबैक है वो नहीं मिलेगा, वो आपका सक्सेसफुल कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा. सो यू मस्ट कंसिडर योर ऑडियंस. आप उनका बैकग्राउंड चेक करें, उनका माइंडसेट देखें, उनके इमोशंस के साथ थोड़ा सा कनेक्ट हैं हो, और जितना भी एम्फसाइज करना है वो यू अप्रोच पे करें. एंड व्हाट इज दिस यू अप्रोच? जब हम इमेजिन यू आर प्रेजेंटिंग समवेयर, और अपनी क्लास में ही आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, एंड यू आर कॉन्स्टेंटली इन टच विद योर बैचमेट्स, like you are asking question, you are clearing their doubts. So that is the you approach. I'm constantly asking you that are you understanding my points or not, am I clear or not. That is the you approach. Whenever we try to consider our audience in that particular manner, कि हम लोग उनसे पूछ रहे हैं, हम लोग उनसे कनेक्ट कर रहे हैं कि are they understood our point, or are they understood our point of view or not, because that will give you a good space or good environment एक effective communication के लिए. See, ये जो point होता है, ये आपके ये जो चीज़ है which is your consideration is directly linked to your courtesy. अब वो क्या होता है कि जब हम किसी भी इंसान को बड़ी पोलाइटली एंड हम समझाने का ट्राई करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, किसी भी कम्युनिकेशन में वेरी पोलाइटली एंथुजियास्टिकली इन्वॉल्व होते हैं. जब आप पोलाइटली किसी भी ऑडियंस को एड्रेस करोगे, दैट मीन्स आप उन्हें कंसिडर कर रहे हो जब भी आप इतनी ज़्यादा पोलाइट हो, एंड आपको वही सेम रिस्पॉन्स रिटर्न में भी मिलेगा. पोलाइटनेस का एक जो बेस्ट थिंग जो होती है किसी भी आपके कम्युनिकेशन में और किसी भी आपके फ्लो में, वो ये होती है कि whenever our audience are disagreed with us and we are very positive about it,
सो आपकी ऑडियंस को भी ये लगेगा कि ओके दैट पर्सन इज वेरी पॉजिटिव विद हिज पॉइंट्स, सो आई थिंक मुझे उसको भी कंसिडर करना चाहिए. That means if your reader or if your audience is well considering you, that means आप उनके साथ connect हो गए and there will be a good flow of information from both the sides. ओके, मे बी ये भी हो सकता है कि वो completely agree कर जाएं आपके पॉइंट से, या फिर आप उनको अग्री करवा रहे हैं किसी भी प्रोसीजर के थ्रू, एंड इवन अगर आपने उनके दिमाग में क्वेश्चन भी पुट करवा दिया एंड they are thinking to reconsider their points. So yes, that is the perfect and example of an effective communication. So guys, ये थे आपके 7 C's. Okay, very basic in nature, but also very important. First is your message must be clear. Second is must be correct. Third, it must be complete, concrete, concise. You must consider your audience, and the last thing is your behavior, your nature, or your courtesy. Okay, these are the 7 C's of an effective communication. I hope आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी, because these are very basic and ये फंडामेंटल्स का ही पार्ट था, लेकिन ये अभी आपके सेकेंड यूनिट में है. तो आपको समझ में आया है या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस. ओके, सो ये थे आपके 7 C's. उतना कुछ बड़ा नहीं था इसमें, बस आपको सही एग्जाम्पल्स क्रिएट करने हैं, फिर कंसिडर करने के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं. और जी, मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता देती हूँ, आपकी डेफिनेशन किसी भी चीज़ की भले ही कितनी भी छोटी हो, दैट इज़ ओके फॉर मी, बट प्लीज़ 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 जब भी आप अपना आंसर लिखो अपने एग्ज़ाम में, मुझे एटलीस्ट 1 या 2 अच्छे एग्जाम्पल्स देना अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए. ओके, सो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना कि आप मुझे सही से आंसर में, भले आपका छोटा आंसर है बट उसे सपोर्ट करो विद सर्टेन एग्जाम्पल्स. ट्राई टू क्रिएट सम इमेजिनरी थिंग्स. ओके. Yes, ma'am. So I'll provide you the notes, I guess by evening, and फर्स्ट यूनिट के सारे नोट्स आप लोगों के पास हैं ही, सो प्लीज़ उनको कवर करते हुए चलना. प्लस एग्जाम्पल्स आर मस्ट. मुझे आंसर के साथ आपकी डेफिनेशन वगैरह के साथ आई वांट एग्जाम्पल्स. मैं कुछ I'll try to give you some क्वेश्चंस जो कि थोड़े बहुत आपके लिए एग्जाम्पल, एक आपका बेस सेट कर देंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस you'll be facing in your exams in future. So मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बता दूंगी. यस राहुल. Ma'am, you gave us one topic in last lecture. Failure Yes, can be your stepping stone or your stumbling blocks. What Yes. about that? यस, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे. आई वॉन्टेड टू कम्प्लीट दैट पर्टिकुलर टॉपिक फर्स्ट, एंड अभी हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. जस्ट वेट. Okay, ma'am. Okay, so let's start with Rahul only. Yes, Rahul, you may start. Okay, ma'am. So today our topic is failures can be your stepping stone or your stumbling blocks. Am I audible to all? Yes. In this present world, every individual is having the fear of failure in their life. But it completely depends on you that how you are taking that failure. That is, you are taking it as a sterling lesson for your future, or you are taking it as a hurdle towards your goal. Failure can be your stumbling blocks in following ways.
If you are practicing for your event since the last 1 year, and now all of your hard work has been buried in the soul, just in a period of 2 3 hours. This situation makes you creepy as you start living in depression, and the fear of scolding by the parents remain in your mind. You generally become blind after your failure and take the most worst step of your life, that is suicide or something else. Failure can be your stepping stones in following ways. When the newborn babies fall several times, the newborn babies fall several times when they try to walk in their early life, but they never lose hope in their life. It is basically the first attempt in learning, as nobody in this world is flawless. Failure is generally said to be your virtual teacher, as you learn most of your lessons from your failures in the life. I will give you the example of one person, Michael Jordan. Michael Jordan once said, I have missed over 9,000 shots in my career. I have lost almost 300 games. 26 times I have been trusted to take the game winning shots and I missed. I have failed over, he have failed over and over again in his life, and that is why he is succeed in his life now, and he is an American professional basketball player. And failure is like a deception from your best friend, as you may lock yourself in the room after this incident, or you may recount several times before helping others. You just have to keep positive attitude in your life, as people will make rumors about you even if you have achieved your respective goals in the first attempt. Thank you, that's all from my side. Okay, very good. You seems very prepared today. Okay, Rahul. So who's next? Yes, Ankit, Ashutosh. I remember, I guess I asked you guys especially कि आप लोगों को next class में you have to present because Ashutosh, can you hear me? Sham, can you hear me? Nandini, Nandini, is it your first class? Yes. Is it your first class? Nandini, please write it down in the chat box. I'm not able to get you. Yes. Kathy, Girisha, Yes, ma'am. are you prepared? I'm not prepared, but I'll speak. I speak on spot. I don't feel like preparing. Okay, that Nandini, that's very good. Okay. So, ma'am, may I start? Yes. So, good morning, everyone. Myself, Girisha, currently pursuing BTech CSA from Dronacharya Group of Institution, and I'm here to share my opinion on the topic whether the failure is a stepping stone in my life or a stumbling block on the road of success. I will start it with a little quote, I guess, that vision means to see the invisible, to feel the intangible, and to achieve the impossible. Actually, challenges or failures can be either stepping stones or stumbling blocks
on the road to success. It's all matter that how we look or how the perception we have made to see something in our life. Like if I take the example of half full glass or half empty, we can say. So it's up to you how the way you look at that particular example or the way you look at it or take the opinion from it. Like one way you will see that it's half empty, it will discourage you, and the one way if you will see it's half full, it will bring in enthusiasm in you. Similarly, we can apply this principle. Similarly, we can apply this principle in our life also. Like we can learn from our mistakes. Mistakes tell us the failure we face due to our mistakes, we can learn from it because it's not that big deal to deal with the small failures in a life, though the big failures can lead you to have something very harmful for yourself. But still, if you are determined for your goal and you are enthusiastic for your goal, then you will never see failure as the stumbling blocks on the road of success. You will take that failure as a stepping stone in your life. Thank you. Okay. Yes. Who's next? So that this is really not done. I told you earlier that I'll be evaluating you for this thing. You have to take these class activities very seriously because we'll be having these activities every day in our every class. This is really not done. Yes. Is there anyone who want to say something apart from Girisha and Rahul? Yes, ma'am. Yes, Satish. Are you prepared? Yes, yeah, something Okay. prepared. Yeah, Yes. so I will start from the point is you have to, from my perspective also, the your stumbling blocks should be turned into a stepping stone because you are living in the yeah you are living in this world and so you will face more difficulty to going to in success. So first you have to change your perspective to see the other things. If you are getting any stuck in your life, then you should learn from that, and you have not discouraged yourself. So and if you are getting if we are getting stuck, then we should get help for anything. If you will not if you will not get help, then you gradually discouraging yourself, and you, one at a point you will not see your uh, so I also say that believe in yourself, so it will be uh, beneficial for everyone, and we should never give up. So and we should learn from the failures and us going forward, and so that's it. Okay, Satish. Thank you. Yes. Who's next?
guys see, in clear words, like जितने भी लोग यहाँ पर हैं 11 of you, take these class activities very seriously because I will be evaluating you on the basis of these activities. Okay? Examination में आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो आपको पता है because that is in the written format. But do you even know कि आप आने वाले 2 semesters में I'll be teaching you English and we'll be dealing with personality development as well. Then also you'll meet me. There. So please, I'm requesting you. There are, I guess, 2 units जो कि आपके presentations, आपके debates, आपके interview, GD इन पर based हैं. एंड चांसेस ये भी हो सकते हैं कि मैं आप ये सारी चीज़ों का रिटर्न हो नहीं पाएगा बिकॉज बहुत ज़्यादा बेसिक्स हैं कि आप क्या लिखोगे जीडी की, कि जीडी में क्या होता है, कैसे होता है. नहीं, जीडी एक प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिकल ही करनी पड़ेगी. इस वजह से आई एम आस्किंग यू कि आप अभी से जब क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे आपका वो थोड़ा सा जो स्टेज फियर सॉर्ट ऑफ जो है, जो भी है, वो थोड़ा कम होगा. देन जब हम ये सारी एक्टिविटीज़ एक रेगुलर फ्लो में करने लगेंगे, लाइक अभी तो हम प्लान कि ओके 1 घंटा हम लोग पढ़ाई करेंगे, बाकी क्या हाफ एन आवर वी वर्क ऑन आवर स्पीकिंग स्किल्स और आवर एक्टिविटीज़. बट आने वाले टाइम में, आने वाली क्लासेस में फुल्ली फ्लेज 1.5 घंटे का आपका ये हुआ करेगा क्लास एक्टिविटी एंड यू कांट स्किप इट बिकॉज वो आपकी यूनिट में है, वो आपके सिलेबस में है. एंड इफ आर दैट स्मार्ट कि हाँ वी नो एवरीथिंग और हमें ये नहीं पढ़ना, वो नहीं करना, प्लीज़ क्लास में मत आना नेक्स्ट टाइम से. इधर रिस्पॉन्ड टू मी, इधर लाइक नेक्स्ट क्लास में जिन लोगों का जैसे अंकित, आशुतोष हैं. आशुतोष आई गेस मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बोला था कि प्लीज़ क्लास में बोला करो. आई डोंट नो कि आप प्रेजेंट हैं या नहीं हैं. And I'll ask sir regarding these issues कि जो बच्चे मुझे आंसर नहीं कर रहे should I mark them present or completely absent. I'll talk to HOD sir like after this class. Because अब मैं आपकी जो अटेंडेंस है वो डाउनलोड करके I'll not mark you, but मैं verbally लिया करूँगी. तब तो बोलना पड़ेगा आपको. बाकी की 2 यूनिट्स कैसे कर लोगे जिसमें रीडिंग और आपका ये स्पीकिंग स्किल्स और आपकी राइटिंग है, वो बाकी आप कैसे कर लोगे. आपकी लास्ट जो यूनिट है वो कम्प्लीटली इन चीज़ों पे बेस्ड है. टेक दीज थिंग्स वेरी सीरियसली. दिस इज सीरियसली नॉट डन. ये कम्युनिकेशन की क्लास है, ये टेक्निकल कम्युनिकेशन की क्लास है. हम लोग यहाँ पर डील कर रहे हैं ताकि हम लोग अपने वर्क प्लेस पे अच्छे से प्रेजेंट हो, प्रेजेंटेबल दिखें हम लोग हर वे से. सिर्फ 3 बच्चों ने मुझे आंसर किया है आज. नेक्स्ट टाइम से कम विद सम रिटन एक्सक्यूज सो दैट मैं वो आपके HOD को या आपके और टीचर्स को भी पास ऑन कर सकूँ और उनसे कंसल्ट कर सकूँ कि क्या ये बच्चे बाकी की क्लासेस में भी ऐसे हैं कि एम आई द स्पेशल वन. इंग्लिश बहुत इजी है ना, लाइक कम्युनिकेशन इज़ वेरी इजी. आपको पता है, आप कर लोगे. इसलिए नहीं पढ़ रहे हो आप क्लास में, इसलिए नहीं आप मुझे आंसर कर रहे हो क्योंकि वो बहुत ईजी है. आपको आयरनी पता चल रही है इस पूरे सेंटेंस में. नेक्स्ट क्लास में पूरा डिस्कशन ही होगा. जिसे पार्टिसिपेट करना है सिर्फ वही लोग आए, जिन्हें नहीं करना है वो लोग मत आए. बिकॉज दिस थिंग इज गोइंग ओवर माई हेड नाउ एंड दिस इज वेरी रिस्पेक्टफुल, लाइक सीरियसली टू मी, टू अ टीचर जो कि आपको कम्युनिकेशन पढ़ा रही है कि आप उसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो. कम विद सम रिटन एक्सक्यूज कि मैम हम क्लास में अभी तक इसलिए नहीं बोलते थे, मैम हम आगे इसलिए नहीं बोलेंगे
और मैम हम इसीलिए आगे क्लास नहीं अटेंड करेंगे, तो प्लीज़ आप हमें एब्सेंट मार्क कर देना, ताकि मैं ये आपके एचओडी को दे सकूँ और हम इस चीज़ पे आगे कंसल्ट कर सकें। I'm repeating again, नेक्स्ट क्लास में जिन लोगों को नहीं बोलना, प्लीज कम विद सम रिटन एक्सक्यूज। क्लास में क्यों नहीं बोलते, क्लास में अटेंटिव क्यों नहीं हो, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप आंसर क्यों नहीं करते हो, आप इतने क्वाइट क्यों हो? बिकॉज दिस इज कम्युनिकेशन क्लास। आई डोंट नो व्हाट यू डू इन अदर क्लासेस, बट दिस इज कम्युनिकेशन क्लास। अपने कोर्स को पहले समझो कि ये क्या कोर्स है एंड इस पर्टिकुलर कोर्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आप मुझे यस और नो का तो आंसर करते नहीं हो। अगर सिर्फ अटेंडेंस का ही इशू है तो वो कैसे मिल जाएगी जब क्लास में मतलब इतने अटेंटिव नहीं होता। बाकी के बच्चे ना कि वो इतना प्रिपेयर करके आते हैं, जैसे आज राहुल करके आया था, मुझे पता लग रहा था कि दैट पर्टिकुलर इज वेरी प्रिपेयर्ड, इज वेरी प्रिपेयर्ड। आई नो इन अदर क्लासेस एज वेल बच्चे प्रिपेयर करके आते हैं, और जो नहीं आंसर कर सकते, जिनका कुछ भी टेक्निकल फॉल्ट हो रखा है, उनकी आवाज़ नहीं आ रही है या उनका माइक वर्किंग नहीं है, उनको नेट प्रॉब्लम है, वो एटलीस्ट मुझे मैसेज तो कर देते कि मैम वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, तो प्लीज़ थोड़ा सा भी आप थोड़े टाइम के लिए कॉल कर लो। आई एम नॉट गोइंग टू बाइट यू, आई जस्ट नीड एन आंसर। नेक्स्ट क्लास में अपार्ट फ्रॉम गिरीशा, राहुल एंड सतीश, बाकी के जितने भी बच्चे हैं, अंकित, आशुतोष, चिराग, नंदिनी, पुरु, श्याम, ख्याति एंड संस्कार, स्पेशली आप लोग पहले प्रेजेंट करेंगे। आई डोंट नो क्या कैसे, अगर आप नहीं कर पा रहे, कोई इशू है आपको, मुझे रिटन में एक्सक्यूज चाहिए। Am I clear? संस्कार, ख्याति, नंदिनी, पुरु, श्याम, am I clear? Okay. Yes, ma'am. I'll see you in the next class. आप लोग नेक्स्ट क्लास में ये प्रिपेयर करके आएंगे। आई डोंट केयर कि आप कैसे करेंगे, मतलब आप बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, आपको माइक इशूज है, कोई बात नहीं, बट आप लोग प्रिपेयर होके आएंगे। आप अपने पॉइंटर्स मुझे चैट बॉक्स में डालेंगे, सो दैट मेरे को पता चल जाए कि यस यू आर प्रिपेयर्ड। दिस इज कम्युनिकेशन क्लास एंड ये सारी चीज़ें मैं अपनी क्लास में नहीं कर, बिकॉज स्टार्टिंग में आज लाइक कि कोई बात नहीं, स्टार्टिंग है, बच्चे अभी बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, बट देन बाकी के बच्चे भी तो ट्राई कर रहे हैं, वो भी तो पढ़ रहे हैं, वो लोग अलग से थोड़ी ना आए हैं। लाइक इमेजिन मैं आप लोगों को भी सेम मार्क्स दे रही हूँ जैसे उन लोगों को दे रही हूँ। मैम वो कहीं से मतलब लग रहा है आपको सेंसफुल? मैम वो लोग मेहनत कर रहे हैं, वो लोग क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यस गिरीशा। Ma'am, sorry to interrupt, but Khyati messaged me yesterday that she is going through fever and throat pain, so that's why she is not able to answer in the classes. She just log in and while attending, she went sleep due to the heavy dose of medicines. That's why. ओके नो इशू ख्याति, प्लीज़ लाइक इफ यू आर लिसनिंग टू मी ख्याति, कोई बात नहीं, अभी आप अपनी क्लासेस सुन लो, क्लास में क्या हो रहा है, नोट्स प्रोवाइडेड है ही, एंड इफ़ यू नीड समथिंग, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके साथ मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, मुझे अब डायरेक्टली मैसेज करना। एंड नो इश्यूज़ अगर आप नहीं कर पा रहे अभी प्रिपेयर, बट लेट्स होप कि आप जल्दी ठीक हो जाओ। ओके, देन वील टॉक अबाउट दिस थिंग। रेस्ट ऑफ यू प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन, लाइक इट सीम्स टू मी लाइक मैं पूरी क्लास में स्टार्टिंग से सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास के लिए इसको मुझे समझ आ गया, मैंने देख लिया, मैं नेक्स्ट क्लास की बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्लास एक्टिविटी। नेक्स्ट क्लास के लिए आई एम गिविंग यू अनदर टॉपिक, दैट इज करप्शन इज एन नेसेसरी इविल।
It's completely up to you now whether you want to prepare or not. I'm not going to request you because मैं तभी भी मेरा जो कहा जो मुझे करना था मैं कर चुकी होंगी एंड बाद में आप लोगों को ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी. I don't want to sound rude here, but this is not the way कि आप अपनी क्लास में इस तरीके से बिहेव करेंगे. What's the topic, ma'am? Corruption is necessary. Write it down in the chat box. Okay, I'm writing it. Corruption is a necessary evil. This is the topic. Try to make at least 4-minute presentation. At least 4 minutes. Okay. इससे ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं. Because मैं पढ़ना भी है. And please guys, please take these activities very seriously. These activities are not for me. These are for you. If you are facing any sort of problem regarding anything, internet or your mic is not working, come up with a written excuse because I'm not going to allow okay. This thing is not going to take like hours and hours, only half an hour. These are very general topics and these are the basic topics we like you'll face in the future in your GDs or everywhere else. So I'm signing off today. I'll see you in the next class. Come prepared. Okay. Bye guys. Thank you, Bye. ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Okay, ma'am. Bye. Bye. Bye.